So basically, this is the question where it is asking that climate resilient agriculture is necessary for increasing productivity of Indian agriculture sustainably while also ensuring food security for growing population. तो दो डायमेंशंस हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज हाउ helping us to increase productivity of Indian agriculture with sustainability and also ensuring food security. So these two are the dimensions, food security और productivity sustainably कैसे increase हो रहा है. So you can introduce the answer by writing that around two-third of India is semi-arid and arid, with over 50% of Indian agriculture being susceptible to droughts and erratic monsoon. So ये एक बेस स्टैब्लिश कर रहा है फॉर द नीड ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. Then we can define that climate resilient agriculture is an approach that integrates sustainable practices to achieve high productivity and farm income under climatic variability. So basically, this CRA is nothing else but it is an approach which ensures sustainable practices and ensuring food security. एक यहाँ पे क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटीज़ का मैप ड्रॉ कर सकते हैं वेयर यू कैन मार्क आउट द ड्राउट प्रोन एरियाज, the areas with frequent heat waves, the areas with where there is hilly terrain, there are issues of cloudbursts, landslides, then there is population pressure, then there are floods, pest attack, water pollution. Then at the coastal side you can mark up sea level rise area and declining fishery. Then you can mention two reports, IPCC and ICAR. So as per IPCC and ICAR reports, by 2050, yield would decrease by 10 to 40%. And to avoid losses, climate resilient agriculture can help. Now, how can this help? This we are writing down in short points. So it can increase productivity. How? Via building climate smart system, information community technology based agro advisors. Then we can have stress tolerant crops, etc. Then second point is some practices like micro irrigation, rainwater harvesting, dry land farming. This can help farmer to tackle monsoon variability and water deficit warmer years like 2023. Then agroclimatic farming or organic farming, zero budget natural farming, soil health card enables farmer to improve soil fertility by organic actions. Then hybrid seed, drought tolerant seed crops promote resilience to disaster and ensures higher productivity. So सारी पॉइंट्स में हमने बताया है कि कैसे सस्टेनेबली एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ ऑल्सो इन सम वे इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. बट उसके अलावा भी अलग से भी एक स्पेशली हम फूड सिक्योरिटी का भी कॉलम लिखेंगे. यहाँ तक ये चारों पॉइंट थे अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी वाया सस्टेनेबल वेज. फिर एक लिख सकते हैं अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी की बात करनी है और पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो उसको मेंशन कर देंगे दैट विद इंडिया क्रॉसिंग 142 करोड़ मार्क इन पॉपुलेशन एज पर UN रिपोर्ट्स, द फूड डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50% बाय 2050. है ना. अब what is the role of CRA in ensuring food security? So obviously increased productivity through CRA gives dual benefit, that is income stability for farmer and food security. Then there is agriculture diversification. We will have fisheries, we will have horticulture. This will enable diversification not only of agriculture but also of diet, which will ensure nutritional and food security. इसमें आंध्र प्रदेश का यू कैन गिव एग्जांपल, ड्रॉ मैप, मार्क आंध्र प्रदेश, राइट. आंध्र प्रदेश द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर. सो इट हैज़ वन ऑफ द फिश नोन एज रोहू फिश या राहू फिश भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको. दिस राहू फिश is used for omega-3 oil, fish oil, protein source, and it is a vitamin rich fish. Then third point you can write that urban farming, vertical gardening, this can lead to urban self-sufficiency.
Then next point you can write that diversifying towards pulses and millets in water stress area also has twin benefit as mentioned by United Nations General Assembly. सो एंड तो यहाँ पे हमने बता दिया कि कैसे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी. And last, you can conclude by saying that agroclimatic maps given by Singh and Dillon and also by ICR can be used to adapt, accommodate, and promote climate resilient agro practices. So, this is a decent answer which can be given for this question of around 15 marks. Then let us discuss one more question, which is mismanagement of water resources coupled with climate change related water stress will severely impact availability of water for agriculture activities. So what is the focus here? Focus is the mismanagement of water resources. Focus here is mismanagement of water resources and with which is coupled with this climate change. And what will do? This water stress will severely affect the availability of water for our agriculture. So basically this is the demand of this is the meaning of the question and we have to discuss this. So let us start discussing this. So it is saying the introduction says that with over 21 cities facing acute water stress, as per Niti Aayog report, water resource mismanagement has emerged as a critical challenge for India, especially when climate change is intensifying. So introduction mein we have kind of agreed with the statement which has been given in the question. Then we have drawn a chart with respect to two aspects, climate change and mismanagement of water stress. So water mismanagement में we have written some points like unsustainable use of groundwater resources की वजह से होता है water mismanagement. और क्यों होता है? Because of unplanned crop section, because of water pollution, because of reduction in conventional या traditional water storage, है ना. फिर क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज से वाटर स्ट्रेस होता है. उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? एक्सट्रीम इवेंट्स, डिसरप्टिंग वेदर पैटर्न्स, है ना, वाटर साइकिल डिसरप्शंस हो जाते हैं. देन हाई रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन भी एक कॉज है वाटर स्ट्रेस क्यों हो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सारे वाटर स्ट्रेस होने के कॉजेज़ मेंशन किए हैं, सारे तो नहीं बट द मेजर वंस. अब क्वेश्चन की डिमांड को केटर करते हैं दैट इम्पैक्ट, सीधा लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ वाटर मिसमैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्कैरसिटी ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे क्या इसका इम्पैक्ट है वही डिस्कस करने के लिए बोला था, सीवियर इम्पैक्ट. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सो द फर्स्ट इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग विच इज़ ऑन अ डिक्लाइन इन इंडिया. तो इसमें एक फैक्ट लिख सकते हैं, अराउंड 55% ऑफ क्रॉप्ड एरिया बीइंग रेन फेड इन इंडिया, है ना, वहाँ पे जो है अनसर्टेन मानसून एंड इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी विल विच इज कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन यील्ड्स. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन ground water depletion could result in reduction of food crops by up to 20% across country by 2050. This is also a point. Then water scarcity may reduce cropping intensity as much as by 25% by 2025. सो ये सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्लाइमेट चेंज या वाटर स्कैरसिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से क्या चेंज आया. तो पहला हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन, यील्ड और इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग में क्या चेंजेस हैं. अब सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से व्हाट आर द चेंजेस इन क्रॉप्स एंड क्रॉप्स पैटर्न. तो क्रॉपिंग पैटर्न इज़ अ डायनामिक फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी and changes over climatic and water conditions. With water stress, multiple cropping patterns are declining. So basically we have said that water stress की वजह से बहुत सारे cropping patterns जो हैं they are declining. Then next point we can write that new areas coming in with traditional agriculture are on a verge of decline. So इसमें लद्दाख का केस आप लिख सकते हो कि स्टडी ऑफ लद्दाख, मेंशन लद्दाख. 90% farmers in Ladakh depend on snow water melting for irrigation. With climate change led snow melt increase in agriculture intensity could be seen. तो हर जगह नेगेटिव ही इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कि अब लिखना है तो नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा, किसी जगह पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है.
तो न्यू एरियाज विल कम, है ना. देन फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम कि वाटर पोल्यूशन एंड डिक्लाइन इन क्रॉप ग्रेन प्रोडक्टिविटी. तो अनसेफ यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन. दिस इज अ ट्रबल. And at the end, we can conclude that by that river rejuvenation, water harvesting, sustainable agriculture, and maintenance of irrigation, conservation agriculture, and agroclimatic planning should be incorporated in India's agriculture planning. This is we are writing a way forward. उसमें हमने ये सारे concept लिख दिए in the way forward. So we have discussed basically what was the demand of the question. So it was asking, we discuss the uh, what will be the severe impacts of mismanagement of water stress vis-a-vis climate change, है ना. तो हमने सारे इम्पैक्ट ऑलमोस्ट डिस्कस किए. उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, वो भी डिस्कस कर लिया, और एंड में एक वे फॉरवर्ड दे दिया. सो दिस इज़ इनफ फॉर